Heartiest congratulations, Dr. Panse. Recently, I met a friend of mine and we got chatting. And we were talking about business in general, and he tells me that doing business in India is a punishment. So I asked him, why is that so? So he said, when we do very well, we are called as heroes. And when we fail, we are called as zeros. He said, when I was doing business very well, there were 4 people who enjoyed my success. First, he said it was the government, because government is to get taxes. And also we created employment, that was 1. 2, the stakeholders and the shareholders, because they saw appreciable value increase. And also they got dividends from us year on year. The third was my staff. He said that my staff was getting salaries and bonuses. And last but not the least, the bankers. The bank is to get business, and of course, is to earn interest also. After that, he said, when my business failed, 4 things again happened. Number 1, I was called a willful defaulter. Then I was called a fraud. I was given multiple names like cheaters, manipulators, and all those stuff. Well, thank you very much to Dr. Panse and to Kanekar ma'am. The thing is that when a person becomes NPA, the first experience is like a shock. You go straight into ICU, and it looks like end of the world. And at that point of time, you get comfort from people like Dr. Panse. And every time I disturb Kanekar ma'am, everything will be okay. She says yes, everything will be okay. So I would like to share you what exactly I have gone through. In 2002, I started a steel trading business, first generation. Started a steel trading business. Everything was going very, very good. I had only one banker, ICICI Bank. Until 2022, everything was fine, very little loan, business was good. Then I acquired a steel factory. When I acquired a steel factory, and things were, larger capital was required, so definitely more borrowings were required. I talked to the bankers. Unfortunately, it was the month of March, and I got approached by Bank of India, and they had to meet their March targets. And what happened, my balance sheet was very good, borrowings were very little, business was good, experience was good, everything was good. So they promised me the sky, the moon, the sun, everything. And then when the actual business started, and the factory started, this slowly made me believe that it will be after 3 months, after 6 months, after 8 months. And I had switched my bank to Bank of India. Then what happened, that as my imports started coming in, the assurances and reassurances pushed me to borrow money from unsecured loans. गुड इव्हनिंग, नमस्कार. मी मराठीमध्ये सांगतो आपल्याला. हे जे एक्सपिरियन्स आहेत शेअर करायला लागलेत, जवळजवळ सर्वच उद्योजकांना जेव्हा हे लोक बँक्स लोन देतात, सगळं बघूनच देत असतात. सगळंच काही जास्त सांगायची गरज नाही. आणि ज्यावेळी तो माणूस अडचणीत येतो, कशामुळे अडचणीत आला याचा विचार केला जात नाही. माझं 2012ला अकाउंट जे आहे NPA झालं. 2012 पासून मी 2024 पर्यंत 12 वर्ष सफर केलं. या 12 वर्षात पहिल्या बँकेनं सिटी युनियन बँक यांनी माझं अकाउंट NPA झाल्यानंतर ते NPA तून बाहेर काढण्यात मदत तर केली नाही, पण चुकीच्या प्रकारे मला लोन दिले. पर्सनल लोन किंवा आईच्या नावावर लोन, दुसऱ्या कंपनीच्या नावावर लोन, ज्याचे त्यांनी लोन देण्याचे प्रकार, चुकीचे प्रकार, अशा पद्धतीने मला त्यांनी फसवणूकच केली. त्यानंतर त्यांनी ARC कंपनीला माझं लोन रिलायन्स ARCला ट्रान्सफर केलं. ARCशी डील करताना पण मला बरेच प्रॉब्लेम आले. त्यांनी ब्लेम करत होते. या सगळ्यांना ब्लेम करतात, चोर समजतात. सगळ्यांशी आपण डॉक्टर पानसे साहेबांच्यामुळं, कानेकर मॅडमच्या यांच्यामुळं समर्थक उत्तरं दिली, आणि त्या माझी बाजू जी आहे ती स्वच्छ आणि नीट जी आहे ती सगळी मी समोर त्यांना बाजू माझी मांडली.
त्यांनी ते मान्य करून मला त्यामध्ये पानसे सरांनी मदत केली आणि त्यांनी मला त्यासाठी सपोर्ट केलं. बँकेनं पण सपोर्ट केला नंतर की ठीक आहे तुम्ही माझी पेमेंट द्या. मी त्यांना पेमेंट्स दिले. त्यांना पूर्ण पेमेंट्स त्यांचे क्लिअर केले 2024 मध्ये. सगळे क्लिअर झाल्यावर असे मी पहिल्यांदाच ऐकलं बँकेनं असं उत्तर दिलं की आमचा हिशोब चुकला. आमच्या ऑडिटरने आमचा हिशोब चुकला म्हणून सांगितले आणि 40 लाख रुपये तुम्ही जास्त भरा. मी पहिल्यांदाच हे शब्द ऐकले की बँकेचा हिशोब चुकतो. अशा पद्धतीने फसवणूक करून मी मग कुठं आरबीआय मध्ये कंप्लेंट केली. आरबीआयचे अधिकारी एक माझे जवळचे मित्र पण होते, त्यांना पण मी हे डिस्कस केलं. मी अगदी मंत्रालयापर्यंत साहेबांच्या पर्यंत पोहोचलो, अर्थमंत्र्यांच्या पण पोहोचलो. हे साहेब असं करतात हे लोक. ठीक आहे, मी त्याच्यातून बाहेर पडलो. मला यांना 10 लाख रुपये द्यावे लागले. पण एकंदरीत प्रवास जर बघितला तुम्ही ना तर ह्या सगळ्यांना बिझनेसमॅनला मग कोणी असू दे सगळेजण चोर समजतात. जरा जरी अडकला माणूस, मग पॉलिटिशियन्स असू दे, समाजातले असू दे, लोक कोणी असू दे, लवकरच याला हे समजतात की नाही हा फ्रॉड आहे, असं केलंय, बँकेचे पैसे बुडवले. असं काही नसतं. कोणीही 1 to 2% असे अकाउंट होतात. त्याचा बँकेने अभ्यास करायला पाहिजे. हा का अडचणीत आलाय, त्याला मदत करायला पाहिजे अशी माझी नम्र विनंती आहे. बरेच तिथं मोठे अधिकारी बसलेले आहेत, त्यांनाही पण मला हेच म्हणायचं आहे की कुठलाही अकाउंट तुमचं एनपी झालं तर त्याचा अभ्यास करा, जसं साहेब अभ्यास करतात. आणि खरंच यांचं एक मानलं पाहिजे की हे स्वतः बघतात की हा माणूस समोरला सच्चा आहे का, तर त्याला मदत करतात, नाही तर हे सुद्धा मदत करत नाही. आणि माझं एवढंच म्हणणं मी सांगून थांबवतो की पुन्हा एकदा डॉक्टर पानसे साहेब आणि डॉक्टर मेकॅनिकल मॅडम यांनी मला बरंच सहकार्य केलं आणि त्यामुळे समर्थक आपण उत्तर देऊ शकतो. खरंच आपल्याला काही माहिती नसतं. हे असं अकाउंट एनपी झाल्यावरच आपल्याला हे सगळ्या गोष्टी माहिती पडतात आणि आपण यांच्याकडे यायला पाहिजे. या लोकांना माहिती नाही आहे की इतकं यांच्याकडं संग्रह आहे, इतका त्यांचा अभ्यास आहे आणि सगळ्यांनी त्याची जेवढं होईल सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. नमस्कार. हाय फ्रेंड्स, सबकी कहानी सेम है, ऑलमोस्ट आसपास ही रहेगी. ओनली डिफरेंस इज दैट कोई पहले मिलता है, कोई बाद में मिलता है. वी आर इनटू बिजनेस सिंस लास्ट 20 years एंड मोर देन दैट इट्स अ थर्ड जनरेशन. हम बैंक का लोन इसीलिए लेते हैं टू ग्रो एंड पेड आवर इंटरेस्ट एंड येट टू हैव गुड बिजनेस इन टर्म्स ऑफ फैमिली रनिंग. बट एज सिचुएशन सेज, कोविड किसी को पता नहीं था, फैमिली लॉस किसी को पता नहीं था. ऑल इट हैपेंड सडनली. ये सब होने के बाद वी आर सो कॉल्ड NPA defaulters. Irrespective of the properties we have, the amount of money we carry along with us to pay back, but still उनका इंटरेस्ट, उनका harassment वो चालू रहता है. But as it said, if God can't be there, this says उनके angels आ जाते हैं. And that's how I met my godfather, as I fondly call as sir and madam. When I went through them, it was just for 7 to 10 days का notice period था मेरे पास, और ये सब केस मेरे को हुआ, negotiation आया. But eventually जब ऐसा सीन आया कि अब नहीं कर सकते थे, नहीं छोड़ सकते थे, तो सर ने कहा, और with reference of डॉक्टर उपाध्याय, उन्होंने ये प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया और होल्ड करवाया. और आज की स्टेज में वी डूइंग बिजनेस अगेन बैक इन फॉर्म, एंड बैंक सामने से बोल रही है कि जो भी सेटलमेंट करना है करते हैं, बट कम टू अस. बट एट सर से मेरे बिना कुछ कहीं नहीं जाना. एंड वन मोर थिंग, हम सिर्फ यहाँ 100 लोग होंगे, 150 लोग होंगे. मेक श्योर दैट वी बिकम द माउथ. हम जितने को बोलेंगे, जितने की एक प्रॉपर्टी, किसी का एक घर बचेगा, उतनी दुआ मिलेगी, उतना काम अच्छा होगा. See, no one wants to be a defaulter. Everyone in the industry wants to be a good businessman, to grow business. But default होना हमारे हाथ में शायद कभी नहीं होता है. But when if we try, but हम किसी का घर बचा सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं. मैंने मेरे रेफरेंस के थ्रू किसी 2 लोगों को बोला था, आज उसका भी घर बचा है. All thanks to sir's guidance and madam's support. Appreciate and God bless you. May we grow more and may sir you have longest life. Thank you, sir.
Katrani ji, partner of Overseas Traders. Please give her a big round of applause. Thank you so much. Over to you, sir. Good evening, everyone. On the guests, friends, welcome. I will not get into the nitty-gritties because I think जैसे इन्होंने कहा कि mostly सबकी थोड़ी बहुत कहानी तो same ही है. But I would like just like to share some thoughts on what I feel about things. Having studied abroad, worked there, came back, joined the family business, things were moving great. Now, we all are attached to our companies. Companies are like our babies, all entrepreneurs. Nobody wants it to fail, nobody likes to fail. But sometimes situations are such that they're beyond your control. See, life, business and your heartbeat are all very similar. ECG कहते हैं ना, हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है. If it's a flat line, it means you are dead. Yes. So life and business is like that. There are always ups and downs. What I feel over the years, the change in the banking industry that has happened is, earlier there was more of a human touch. Norms, systems are all good, but they are guidelines. अगर सब कुछ system या norms पे ही चलता, तो human manager को वहाँ बैठने की ज़रूरत क्या है? See, they are there to understand how each individual, each business is different, and how their intervention is required when something, is not working out in the systems. So that touch is now slowly going away. It's all completely system-based. क्या होता है? Each business, each industry is unique. Guidelines and all are important, but at the same time, your human intervention is there to understand the business and guide through difficult times. For example, I'll give you an example of our business. Now, Sri Lanka was one of our major supply centers. It went through a difficult phase, forex problems, economic turmoil. Payments were stuck for years, for 2 years. Not in our control, something beyond one's individual capacity. During those times, and to multiply that, COVID also came in during the later stage. So to help in that period, it was very critical to get the financial support from banks. But instead of supporting, everything was pulled back. At the same time, the second most difficult thing that I find in our economic system is, whenever the business or the entrepreneur fails, the first attitude, as many of you also said, is the negative approach of all people at that time on an already pressured person puts him in a very difficult situation. And that is where people like Dr. Panse, when at that time, that emotional and psychological support is what is most critical. And I would like to thank him for that. And I would just like to end by saying is that at such times, we need people like him to guide us through those difficult, roadmaps, and then come out successful as we are today. Thank you very much. So much for joining us, sir. Respected, Maratha ji and our Vishwas, Dr. Vishwas Panse ji and our friend Chandrakant ji and all ladies and gentlemen. Of course, being a banker, we have seen the best of the period, we have seen the difficult period, and as rightly mentioned some of the entrepreneurs, that so long as आपका नियत अच्छा है, then it is always easy for the bank to see that solutions are given. अभी आपका all of you explained, the one point we did not have come, that in a small enterprises or some big business or all that, if there are any drawings which are for personal use or the family use or whatever, and also that drawings, if they don't come, that will make your working capital tight, and the relative working capital will not be there. That is the one issue. Of course, in industry also, there are variations. Whatever we thought that it can be done, as rightly said,
either on the global reason or on the domestic reason, sometimes what we planned could not be achieved. So, as rightly somebody said that some are negative, some are positive from the bank, sector-wise, all that. But there are other points where banks have helped and banks, quite a lot of customers have also succeeded, and I had so many instances where small customer who was getting better facility from the branch manager, the same man had gone into the big IPO and later he made a big killing in that. There are some, under the Prime Minister's employment generation also, some of the clients who have later converted into a listed company. So we have a different proposition from both the side. But as I mentioned that we have to be customer friendly, we have to understand totally, and there are, so long as we have a positive mind to help the customers, definitely the customers will get definitely good treatment. But as you see, we have our CDB Sabidare, he is from the CDB earlier. So he has such a lot of cases and he has been trying to give solutions. Same way Dr. Vishwas Panse with his rich experience in IDBI Bank, as well as also he was a central banker and in the later other financial institution. Those days, today there are so many corporate here, whether IDBI Bank or ICICI Bank in the earlier hitherto, and of course CCOM, they would not have come to this level. There have been a success from these 3-4 institutions which has given them that, particularly in Maharashtra. So I was also director for CCOM for 3 years. I have seen, but so many companies also later failed also. And even the CDR mechanism, Saab is there here in the IDBI, there are a lot of cases which have come out of the CDR and they have succeeded. There are a few cases who failed with the CDR mechanism. After that, the new areas have come. So I do subscribe all your pain point which you mentioned, but so long as we have the determination and we want to succeed, I am sure the success comes even without confidence also sometimes can come. MSME platforms. While I agree with the entrepreneurs that they are facing problems at the ground level when they are dealing with the different bank and bankers, it is not that the government is not doing anything for the entrepreneurs. Many things have been initiated by Reserve Bank of India, DFS, Government of India for the betterment of the MSME and the entrepreneur. To name few, the definition of the MSME is so vast today. Any business can be included in the MSME. The collateral free loans is another initiative taken by the government. The minimum rate of interest and the other rating criteria which is not applicable to the big corporates is not applicable to the MSME. So it is not that the government is not doing anything and they do not know the pain points. But as our veteran Sir Mr. Narendra have said, there are two sides to every coin. And there are good bankers who have helped many entrepreneurs and they have come up. But at the ground level, the problem will outnumber the success. And so, definitely the NPA management book written by Dr. Vishwas Panse will come in handy to the bankers, to the entrepreneurs. And I feel there is a need, there is a definite urge and need of the consultant or the firms which... Give some volume to my mic. Alright everyone, Kasat hai Mumbai Majid? Yes. Jhakas? Yes.
ऑलराइट, तो मोमेंट आलेला आहे. सर्वप्रथम डॉक्टर पानसे, कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. जोरदार टाळ्या असल्या पाहिजे. कम ऑन एव्हरीबॉडी. दिस बुक इज नॉट एनी ऑर्डिनरी बुक. हे एक इमोशन आहे. ही एक अशी गोष्ट आहे that it's a solution to all the entrepreneurs, the people who don't really know when we start a business, right? We all can relate to this. Yes. But we take the loans, but how do we come out of that problem is something Dr. Pansay has been guiding a lot of people, and today, in fact, right now is the time, ladies and gentlemen, that we are here to unveil this gorgeous beauty. I would rather call it beauty because यही बुक है, इन्हीं का ही गाइडेंस है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां बदली है. So are we truly ready for this? Yes. Yvonne, they are all ready. Ashwini. Thank you so much, Rupali. First of all, a big round of applause for her, ladies and gentlemen. The energy she has got in the house. So finally, are we all ready for the book launch? ये इतना एनर्जेटिक वाला नहीं था. ये एनर्जी से तो हम बुक लॉन्च बिल्कुल नहीं करने वाले हैं. So once again, are we all ready for the book launch? Oh, absolutely. NPA Nightmare Struggle for Survival and Revival. क्योंकि ये जिंदगी आप PhD and PhD. So ladies and gentlemen, let's give a big round of applause and request you sir to please join us here and share the story behind this. जोरदार टाळ्या असल्या पाहिजे. एव्हरीबॉडी, डॉक्टर पानसे यांच्याकडून आपण ऐकणार आहोत द रिअल स्टोरी. यू गो सर. I am really grateful today. Person like Satish Marathi, he was my mentor. Where I came to Bombay, I was going only one place, that is Bank of India, and I was guided from VT station to Bank of India. कैसे जाने का मुझे बताया गया था. उसके बाद I met him. Thereafter he was my guardian, and he made my initial career in banking sector. त्यानंतर माझा आवाज चालू ठेवा. Good evening, friends. Let me congratulate Dr. Pansay for including his brain, pain, and gain in this book. Let's have a big hand. He has given the name of the book is Struggle for Survival and Revival. I want to rename it. NPA Nightmare, Struggle for Revival and More Survival, and happily survival in the economic growth of the nation. Friends, I have heard Mr. Pramod Rao. प्रमोद राव जी, आपने जो कहा कि इस भारत देश में बिजनेस करना पनिशमेंट है, ये गलत है आपका. भारत देश में बिजनेस करना ये अपॉर्चुनिटी है. ये डॉक्टर अपने हमारे सतीश मराठी जी आज के चीफ गेस्ट आपको बताएंगे. आज 40-50 साल से कोऑपरेटिव बिजनेस से लेकर नेशनलाइज्ड बैंक से लेकर आज की डेट में ही इज द ओनली पर्सन ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बोर्ड फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर. आज तक कोई भी गवर्नमेंट को, कोई इवन हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तब तक और अभी के प्राइम मिनिस्टर तक कभी किसी ने सोचा नहीं था. आज के प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि हमारे रिप्रेजेंटेशन में हमारी तरफ से कोई तो सेंट्रल बैंक पे होना चाहिए. इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस रादर. My very old friend, Dr. Vishwas Pansay, चंद्रकांत जी सालुंके, बहनों और भाई, and speak both in English and Hindi. काफी समय हो चुका है, फिर भी
एक विषय तो आपके सबके सामने मैं जरूर रखूंगा। डॉक्टर पांसे जी ने जब पुस्तक की कल्पना बताई और ये किताब मुझे पढ़ने दिया, तो मुझे ध्यान में आया कि दिस शुड बिकम पार्ट ऑफ द करिकुलम इन कॉलेजेस एंड फॉर MBA स्टूडेंट्स। अड़चने आती हैं, अड़चने हाउ टू सॉल्व देम, उसका सोल्यूशन है। इट्स ए 360 डिग्री बुक है वैसे। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस किताब से हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए ये हर एक एंटरप्रेन्योर को पता चल सके। अच्छे कंसल्टेंट के साथ अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए। बट मैं चाहूंगा कि उन्होंने बनाया हुआ रिपोर्ट हम स्वयं पढ़े, डिटेल क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। ऐसा करने से जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स में जानकारी प्रमोटर को होती है। बहुत बार मैंने देखा है प्रपोजल लेकर आते हैं, बट बात तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है एंड the promoter at times doesn't know what exactly he is saying and why he is saying that. तो अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्ड जानकारी हो, ये बहुत बड़ी आवश्यकता आज के दिन में है। NPA होना ये अपने देश में धीरे धीरे कम हो। आप सबको ध्यान में होगा कि इनकम रिकग्निशन और एसेट क्लासिफिकेशन की संकल्पना अपने देश में 1991 में आई। वी हैव कम अ लॉन्ग वे, आज 35 साल हो गए। ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी। और ये मेरा बहुत साल का सपना था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं किसी बुक में डाल के कॉमन बोरोअर के पास में पहुंच पाऊँ। जनरली ऐसा होता है कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन रीच टू मी। तो जो मेरे पास रीच नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये बुक बहुत काम की चीज़ है। कॉमन बोरोवर, कॉमन पीपल मीन्स कॉमन बोरोवर। उसका मतलब इतना ही है कि आपने एक बार लोन लिया और बैंक का हफ्ता अगर आप 90 डेज तक नहीं भर पाए तो आपका अकाउंट NPA हो जाता है। और जब अकाउंट NPA हो जाता है तो बैंक रिकवरी मैकेनिज्म चालू करती है। तो उसमें से उनका घर चला जाता है, उनकी फैक्ट्री चली जाती है। वो बचा के वापस बिजनेस में कैसा आने का, ये इस बुक के ज़रिए मैंने बताने का प्रयास किया है। एक्चुअली बैंक बहुत कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन एक बात ऐसी होती है कि बोरोवर बैंक के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो ट्रांसपेरेंट नहीं होने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। उनके दिमाग में ये आता है कि अगर मैं बैंक को मेरा प्रॉब्लम बताऊं तो बैंक मुझे परेशान करेगी। कुछ हद तक वो सही हो सकता है, बट मच डिपेंड्स ऑन द बैंकर। आपके बैंकर को आप कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा NPA हो गए तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। जितना NPA कम उतना देश का GDP बढ़ेगा, उतनी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो NPA कम होना बहुत ज़रूरी है। NPA नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट यू शुड रिड्यूस इट। करीबन 8 लाख करोड़ के NPAs हैं।
अगर 8 लाख करोड़ का एनपीए होने के बावजूद भी हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, अगर ये एनपीए को अगर हम ज़्यादा सपोर्ट दे के इनको बाहर निकालेंगे तो शायद इट विल गो अप, तो अपने देश की इकोनॉमी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। कोई भी बिजनेस में आना चाहता है तो उसको ये समझना चाहिए बिजनेस डज नॉट मीन कि आप ऊपर ही जाओगे, अप एंड डाउन पार्ट ऑफ द लाइफ, सो दे शुड नो दैट व्हेन इट कम्स टू डाउन लेवल व्हाट शुड बी डन, हाउ द माइंडसेट हैज टू बी डन चेंज, सो दैट इज व्हाट दिस बुक विल हेल्प। कॉमन बोरोवर आप बोलो, कॉमन पीपल, दोज हु आर नॉट बोरोइंग, देयर इज नो concern of this book for them. Thank you. थोड़ा जोर से बोली. नाही ते पुस्तक अत्यंत चांगलं पुस्तक आहे आणि सगळ्या उद्योजकांनी असलेले आणि नवीन होणारे त्यांनी त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी हे पुस्तक जरूर वाचलं पाहिजे आणि आपला व्यवसाय सुरू करत असताना त्याच्यात त्यांनी ज्या गोष्टींची काळजी घ्या सांगितली त्या सगळ्या गोष्टी जर का केल्या तर आपला व्यवसाय ते चांगला चालू शकतील. NPA सारखा प्रश्न उभा राहिला तर त्यालाही सक्सेसफुली सामोरे जाऊन आपला व्यवसायाला धक्का न लागता ते पुढे मार्गक्रमण करू शकतो. अर्थव्यवस्था में तो परिणाम होता है कि NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सिंपल भाषा में बैंक जो लोन देता है उस लोन का इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट जो बोरोवर है वो भर नहीं पाता. इसका मतलब है पब्लिक का पैसा बैंकों के माध्यम से फंस जाता है. तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है. इसके लिए NPA कम से कम हो इस दृष्टि से अपने सब प्रयास रहते हैं. तो हमारे देश में NPA आज के दिन में बहुत कम हुआ है और वो और कम होने की आवश्यकता है. इसको ध्यान में रखते हुए ये किताब बनाई गई है. ये गलत है आपका कहना, टोटली गलत है. ये आप मुझे इमीडिएट उसके ऊपर जो परिणाम होगा वो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, $8 से एक दिन में बढ़ गए तो उसका इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है, महंगाई बढ़ती है. तो आज के दिन में देखते हैं कि कितना चल. इमीडिएट तो अपने ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा बट ये लंबा चला तो कुछ ज़रूर पड़ना. छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं बैंक का नजरिया उनको देखने का हमेशा अलग होता है, ऐसा क्यों? उसका कारण है जो छोटा बड़ा का मतलब है उसको एक्सपीरियंस कितना है, उसके पास खुद का कैपिटल कितना है, उसके पास उसकी फैक्ट्री मशीनरी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कितना है, वो अलग होता है. तो उसके कारण स्वाभाविक रूप से उन दोनों को देखने के लिए अप्रोच अलग रहता है. इतनी बात है. बट कम उसको कोई ये छोटा है उसके लिए उसको इग्नोर करो ऐसी कोई बात नहीं है. What message you want to give to borrowers through your book NPA Nightmare? Through my book, I want to tell the borrower that don't worry if you become NPA.
that is not the end of your life. This is not the end of your business. You can still come back, you can survive and you can revive. Wow. What is your request to the policy makers for betterment of MSMEs? Policymakers should think that NPA is inevitable. But after NPA, the treatment which is given to the NPA customer has to be changed. The policymakers should think that how they should come back and then revive, rather than going for their liquidation. So that should be avoided. That is my advice to the policymakers. Okay, sir. Thank you. Thank you.